नमस्कार। आप सबको अक्षय तृतीया की खूब खूब शुभकामनाएं। आज सुबह से अक्षय तृतीया से संबंधित संदेश आ रहे हैं और मुझे आश्चर्य हो रहा था कि क्या अक्षय तृतीया सिर्फ एक तिथि है? इज इट जस्ट अ डेट that people celebrate? Is it certain planetary influences why Akshay Tritiya is so great? What is the secret behind this? And what dawned to me today, I wish to share with you all. Let us understand the meaning of Akshay and Tritiya. Akshay means that which does not deteriorate, that which does not die, that which does not disintegrate. यानी जिसका क्षय नहीं होता, जिसकी मृत्यु नहीं होती, जो अनश्वर है। अनश्वर क्या है? हमें इसका कोई अनुभव नहीं। हम जहां भी देखते हैं, जो भी अनुभव करते हैं, वह सब आज है और कल नहीं हो जाएगा। गुरबाणी में उल्लेख है, राम गयो रावण गयो। The Ram also disappears, the Ravana also disappears. शुभ हो या अशुभ हो, दोनों विदा होते हैं। जिसने आकार लिया, जिसने रूप लिया, वह आज है और कल नहीं हो जाएगा। नियम है, जो उपजे सो विनश है। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी। तो अक्षय इशारा है उसकी तरफ जिसका न कभी जन्म हुआ और न कभी मृत्यु होती है। तो ऐसा क्या है जो अक्षय है? किस तरफ इशारा है हमारे ऋषियों का कि अक्षय तृतीया, इस दिन हम जो कार्य की शुरुआत करते हैं वह कभी समाप्त नहीं होता, फलता है, फूलता है। कौन से कार्य की तरफ इशारा कर रहे हैं ऋषि? क्या वो कह रहे हैं कि जाओ सोना खरीद कर लाओ? क्या वो कह रहे हैं कि कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करो? नहीं। अक्षय यानी अमृत, उसे खोजने की शुरुआत करो जिसका न कभी जन्म होता है, न कभी मृत्यु होती है। और इशारा छुपा है तृतीया में। कहाँ उसे खोजना, कहाँ अमृत मिलेगा? तृतीया, द थर्ड। हमारे अनुभव में दो आते हैं, तीसरा नहीं आता। तीन तत्व सदा मौजूद हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती। सरस्वती अदृश्य है, दिखाई नहीं देती, लेकिन ऋषियों ने उसकी तरफ इशारा जरूर किया है। गंगा और यमुना दिखाई पड़ते हैं, कितने ही मेले क्यों ना हो, दिखाई पड़ते हैं। और खोज लेना है सरस्वती को, यानी तृतीया को। तो हमारे केस में, हमारे संदर्भ में, साधना के संदर्भ में, वह तीसरा तत्व कौन सा है? वह तीसरी नदी कौन सी है? जल तो सब में एक है, थोड़ा मैला है और शुद्धतम रूप में मौजूद है। इतना सा भेद है। हम जो जो अनुभव करते हैं, कुछ भी, हमने कुछ स्वाद चखा, हमने कोई ध्वनियां सुनी, हमने किसी को छुआ, जो भी हमारे जीवन के अनुभव है वह आज है और कल विदा हो जाते हैं। पहला तत्व यानी that which we experience. The second element is the experiencer, जिसे अनुभव होता है। तो एक तो ध्वनि है जिसका अनुभव है, स्वाद है, गंध है, स्पर्श है, और दूसरी तरफ जिसे यह सब महसूस होता है। तो ये जो दूसरा तत्व है जिसे यह सब महसूस हो रहा है, जो इसे अनुभव कर रहा है, वह भी आज है और कल नहीं हो जाएगा, वह भी मिट जाएगा, वह भी खो जाएगा। तीसरा तत्व एक और है जो सदा सदा से है और सदा रहता है, उसे खोज लेना है। इसलिए अक्षय तृतीया, फाइंड द नेक्टर, फाइंड द अनडाइंग सेल्फ। एंड वेयर इज दैट अनडाइंग सेल्फ? Which is that undying self? It is the third element. This third element is called witnessing consciousness, awareness, pure awareness. How do we understand this awareness? How do we understand this consciousness? The easiest is the example of a movie theater. There is the projection on the screen. Whatever is projected on the screen, that is
the experience. That is the first element. And then there is the one who is going through that experience. In this case, us, sitting in the movie theater, watching the movie. So the movie is the experience and we become the experiencers. But there is a third element. That is the screen on which the movie is being projected. Movies can change. There can be hundreds of movies, just like there can be millions of experiences. They keep on changing. And in the audience, people sitting and watching the movie, they could be millions. I may die tomorrow, somebody else is watching this movie that we call the world. But there is one thing that is a constant. That is the screen on which all this is being projected. That screen is the thread. It doesn't matter whether the movie is a horror movie, it's a comedy, it's a tragedy, it's a romantic movie. It doesn't matter at all. The screen remains untouched by all the movies. So there is the experience, there is the experiencer, and then there is the witnessing consciousness that is witnessing, not indulging, not as a part of the experience, not as a part of the experiencer, untouched by both. This witnessing consciousness is Akshay. This is the true nectar. This is the Amrit. This is the undying self. Now, also very important to understand, this consciousness is not a mental thing. It is not a mental conclusion. It is not the analyzing mind. You may sit and start to think about this, analyze this. There are experiences that come and pass. There is this experiencer that will come and pass. So, the one who is analyzing this starts to think, this is the truth. No. This consciousness is beyond all this analysis. It is experienced only when you begin to be conscious of the experience, and then you begin to be conscious of the experiencer, and while you are witnessing, while you are watching, whether it is the experience or the experiencer, there comes a moment these both disappear. There is no experience, there is no experiencer, and yet there is this consciousness, yet there is this awareness. It is an experience, it is not a conclusion, it is not a mind thing. The experiencer is the mind. Remember, you taste something, you hear something. Who is experiencing this? Now, my hand is moving. This is a kriya. This is a movement. This is an action. This is the experience. And the one who is moving this hand is the experiencer. Where is this movement coming from? This movement comes from the mind. Now this can be either the conscious mind or unconscious mind. It doesn't matter. The movement can be conscious, it can be unconscious, the movement can be intentional, it can be just a reflex, but it is all born from the same mind. So, there is the experience and the experiencer. And then there is the third element, watching the play between these two. That is the consciousness we are searching for. The whole sadhana is to rise above these two. Not below, rise above these two. To be so conscious, to be so aware, first of the experience and then of the experiencer. And then allow the experience to disappear, allow the experiencer to disappear. There is no analysis, there is no recording of the experience. And yet there is awareness. This is the third element. This is Tritiya.
This is Akshay. And all the rishis have said, whatever you begin on this day, on Akshay Tritiya, will last forever. What is that? It is this sadhana. The moment you begin your search for Akshay, and the moment you have found that what you are seeking is the third, not to be involved, not to indulge in the first and the second element, in the experience and the experiencer, but to find the third, your journey has begun. And this journey will never die. This is always with you. Whatever your journey is, you will continue from that point onwards. Remember this and begin that journey today. It doesn't have to be on a special date. It doesn't have to be on a special occasion. Just remember what you are searching for. And this is the difference between a sadhak and a sansari. संसारी उसकी खोज में है जो आज है कल नहीं हो जाएगा. साधक उसकी खोज में है जो सदा सदा से है और सदा रहेगा. तो संसारी नश्वर को खोजता है, साधक अमृत को खोजता है. तो संसार में खोजना हो तो अनेक विषय हैं, उनमें भटको, खूब खोजो, खूब खोजो, खोजते रहो, अंत में कुछ भी हाथ नहीं आता. और साधक सिर्फ एक को खोजता है, वह तीसरा तत्व, वह जो सारे खेल को, जो इस लीला को सिर्फ जान रहा है, देख रहा है. इस सारे खेल में मौजूद है, लेकिन इस सारे खेल से अछूता है. ओशो के शब्दों में कहूँ, being like a lotus in the mud. हरि ओम तत्सत.